Hello and good morning to all. Welcome to your DSS online class. Now, next topic is encryption and decryption. Encryption and decryption tools is one of the most important tool we have the computer, and it is generally used to store our generally whatever write on your computer, that data is an simple plain text format. It means that data can easily be hacked by any includer. So when we share that data and network enforced data encrypted by our computer system by using some protocols, and when any computer receive that encrypted data, then the data is decrypted, converted into its plain format. This process, encryption and decryption, decryption is not only use the server, the networks, but sometimes it can also be used by us when we are share any important files. Suppose a person have a bank document, a local network, and or a public network. In that case, that person may need some sort of security, and for that of security, that person can decode or encode this file so that includers or other users cannot read it, and this process is called as encryptions. Now let's read and discuss. Encryptions refer to the conversion of electric data into another form. It means you will write something else and that data will be converted into other forms. This encrypted term that is called ciphertext. Fine. It is termed as cipher text. It is CIPHER. Cipher. Fine. This ciphertext cannot easily understood by users. Fine. Now, ciphertext terms used to refer or alter data so as to make the data and intelligible to unauthorized users. The primary purpose of encryptions is protect to the confidence of digital data stored on computer system or transmitted via internet or other computer network. Next process is decryption. This decryption is opposite of encryptions. That is, it will convert your ciphertext on the plain text format. There are many utility software that provide facilities for encryption or decryption of the data. Some of these software are LastPass, BitLocker, VeraCrypt, PhilanZip, 7zip, Symantec, endpoint encryption, and some others. Now, next topic this class is device driver. In previous lecture, I am discussed by device driver. What is device driver? Again, see this. What is device driver? I hope that everything you got it in utility software. If in case any doubt, then you come and explain your doubts. Now let's discuss about device driver. But before that, I have a question for you all. That is the write the message my personal WhatsApp and send me your doubts. Okay. Now come on the what is the driver? You like hold all that. What is the driver? Person who's drive the car or any other vehicle. Similarly, this device driver is a software which let you work without particular hardware component, not without, with hardware component. Let's talk about the printer. Whenever you purchase a new printer, if you directly connect the printer, the computer, you want to able to use it.
Why? Well, the answer is because that printer will not authorized or will not it confirmed by your system, because your computer doesn't know what you are plugging in your computer system. So that's why first we need a software. That software will read and identify your printer. Fine. So that means the software which is, let us accept that hardware in the computer system is termed at device driver. मैंने इसका एग्जांपल पिछले भी क्लास में आपको दिया हुआ है कि अगर बाज़ार से आप नया कंप्यूटर ख़रीदते हैं, प्रिंटर ख़रीदते हैं और डायरेक्टली लाके आप क्या कर देते हैं, अपने कंप्यूटर में जोड़ देते हैं उसको, तो क्या वो प्रिंट आउट देगा? इस पर क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो उसका आंसर यही होगा, डिवाइस उसका ड्राइवर नहीं है, इसकी वजह से वो प्रिंट आउट नहीं दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस कहने का मीन्स यही है, ठीक है। मोर कॉमनली नोन एज ए डिवाइस ड्राइवर और हार्डवेयर driver is a group of file that enable one or more hardware device to be communicate with the computer's operating system. Without driver, the computer would not be able to send and receive data currently to hardware devices such as a printer. Okay, now clear? Well, now we have to discuss that which device generally needs the drivers and which device doesn't need the driver. Now hardware devices data are unknown by the operating system. Fine, these devices or these driver computers hardwares generally need the driver programs. Fine, let's talk about card reader or controller or modem or motherboard chip set, network card, printer, scanner, sound card, tape drive, USB drive, video card. These are some devices which may need the device driver to function properly. Now let's take an example of USB driver. Or USB drive is or a pen drive or memory card. You all might have seen that we connect that phone to your computer. Generally a pop-up appears, then the loading bar appears, and when that loading is coming completed, then you are able to use it in your computer और PC. तभी तो आप यूज़ करते हो ना, पेन ड्राइव लगा, देखो तो पॉपअप आता है पहले से कि हार्डवेयर ये कर रहा है रन, तब जब वो टिक कर देता है तब आप क्या करते हो, उसको यूज़ करते हो. नाउ व्हाट इज़ लोडिंग थिंग्स? What is actually? So basically that loading is a type installation of a device driver or your PC, but that device driver is not permanent. The same things happen in pen drive. Whenever you plug in pen drive in your PC, firstly the pen drive is read it and play it. जब भी आप पहली बार अपनी पेन ड्राइव को अपनी पीसी में लगाते हो तो पहले वो रीड करता है बेटा, उसके बाद से रीड करने के बाद से प्ले होता है. देखे होगे आप. इन दैट इज दिस प्रोसेस स्कैनिंग और रीड द ड्राइवर्स ऑफ दैट पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड और इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर फ्रॉम दैट पीस ऑफ हार्डवेयर. फाइन, इट मीन्स पेन ड्राइव्स और योर मेमोरी कार्ड या एनीथिंग्स, इट मीन्स क्या हुआ कि इनके पास ऑलरेडी इनका पीसी में या योर मतलब आपके मोबाइल में इनका मतलब ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है. बट देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स, देयर आर सम हार्डवेयर सच एज कार्ड रीडर, स्कैनर, प्रिंटर्स, वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड. These all need the separate sort of softwares that you have made to download is from internet, or you will receive CD with these devices. Now let's discuss about what device may not need the driver. Well, generally
all the component known to your computer. It means component that we are mostly using. Fine. These components these are CPU. Fine. CPU के बिना तो कंप्यूटर चलेगा नहीं. Then माउस के बिना भी कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. मॉनिटर के बिना भी नहीं करेगा. Well, also let a very important part. Speakers are also a very important part. RAM is also very important part. It means all these components are the basic component. Keyboard, mouse, monitor, power supply is very important for that. UPS भी होना चाहिए. These are already known your computers. That's why they don't need any driver softwares. But कुछ exceptions भी हैं. Exceptions क्या है भाई? Suppose you are using gaming mouse. Fine. Suppose you are using gaming keyboard or any other gaming controller. Now these gaming mouses, these gaming keyboards, gaming controllers are known not your मतलब आपके कंप्यूटर को नहीं जानता है. बिकॉज जनरल कंप्यूटर फंक्शनिंग में इन डिवाइसों की ज़रूरत नहीं होती है. इसलिए कंप्यूटर में इन डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल नहीं होते हैं. सो नाउ व्हेन यू आर प्लगिंग द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स दैट डिवाइस इन योर कंप्यूटर सिस्टम, पहले क्या होगा भाई? पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा उस पीसी में, एंड देन वी विल ओनली एबल टू यूज़ इट. पर्टिकुलर हार्डवेयर को तब जाके आप यूज़ कर सकते हो. फाइन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नाउ व्हाट हैपेंड इफ ए ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल. चलो पढ़ते हैं, देखते हैं. किसी सिस्टम में नई ड्राइवर इंस्टॉल हो तो क्या होगा. इफ़ द एप्रोप्रिएट ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल द डिवाइस मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली इफ़ एट ऑल. मैंने ये नहीं कहा है कि डिवाइस वर्क नहीं करेगा. मैंने सिर्फ ये कहा है कि हो सकता है डिवाइस प्रॉपरली वर्क ना करे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. भाई सपोज आई हैव ए प्रिंटर. फाइन. लेट्स सपोज आई हैव ए HP प्रिंटर. लेट्स से 1005. फाइन. जो अब ये जो HP का 1005 प्रिंटर है, ये प्रिंट स्कैन कॉपी वाला प्रिंटर है. यानी कि मैं इसे स्कैन भी कर सकता हूँ, प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ और फोटोज़ कॉपी भी कर सकता हूँ. अब मैंने क्या करा भाई कि इसका अब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया मैंने अपने कंप्यूटर में. जब मैंने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया तो मेरे कंप्यूटर ने नॉर्मल तरीके से इसको प्रिंटर मान लिया. अब वो मुझे प्रिंट आउट करने में तो हेल्प कर रहा है, लेकिन ये फाइल्स को स्कैन नहीं कर रहा है. इट मीन्स द डिवाइस इज़ प्रॉपरली नॉट फंक्शनिंग. फाइन. अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज़ मैंने मार्केट से एक गेमिंग वो ख़रीदा, गेमिंग कीबोर्ड परचेज़ किया. फिर मैंने क्या करा कि उस गेमिंग कीबोर्ड को मैंने अपने पीसी में लगा लिया भाई. ठीक है. बट उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ था. ठीक है. अब क्या होगा भाई कि जो वो गेमिंग कीबोर्ड है, कुछ स्पेशल जो उसकी की है वो उसकी फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं. अब जैसे मैंने पीछे कहा कि कंप्यूटर ने हमारे उसको प्रिंटर तो मान लिया, लेकिन वो स्कैन नहीं कर रहा था. अब मेरे कंप्यूटर ने इसको कीबोर्ड तो मान लिया, लेकिन कुछ फंक्शन उसके गेमिंग के वर्क नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स क्या हुआ, सिस्टम मेरा प्रॉपर तरीके से वर्क तो कर रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है. क्लियर है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि भाई समझते हैं. कैन ए ड्राइवर मेक माई कंप्यूटर डू मोर? एंड योर ड्राइवर कंप्यूटर लेट वर्क driver only makes the hardware installed in the computer function properly. If the correct driver is not installing the latest driver for the hardware can take full advantage of the device. For example, you don't need the video card hardware as well as the video card drivers to be installed. Now अभी के लिए बस इतना ही. ठीक है. Now next class में देखते हैं क्या चीज़ बचा हुआ.